हेलो फ्यूचर हेल्थ केयर हीरोज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हार्ट फेलियर। इस वीडियो में हम टैकल करने वाले हैं हाई यील्ड एनक्लेक्स स्टाइल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो स्पेशली नॉर्सेट, आरआरबी और ईएसआईसी एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे आप नर्सिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो या अपने नॉलेज को पॉलिश करना चाहते हो, ये क्विज आपके लिए है। Question 1. A 67-year-old patient with pneumonia becomes confused. Respiration rate equals 26 per minute. SBP equals 98 millimeters per mercury. Temperature equals 38.9 degrees Celsius. Which bedside screen most strongly suggests sepsis risk? A. SIRS, heart rate greater than 90 and WBC greater than 12. B. Q-STOFA, respiration rate equals 26, systolic blood pressure less than 100. D. Curb 65, pneumonia score only. Answer B. Q-SOFA, respiration rate greater than 22, systolic BP less than 100. Altered mentation explanation. देखो, sepsis का quick bedside screen Q-SOFA होता है। तीन चीज़ें, tachypnea, low systolic BP less than 100 और mental status change। इस पेशेंट में तीनों प्रेजेंट हैं। ये हाई रिस्क है। जल्दी सेप्सिस बंडल शुरू करो। गलत क्यों? सर्स पुराना स्क्रीन है, हेल्पफुल है, पर क्यू सोफा ज्यादा स्पेसिफिक बेडसाइड अलर्ट देता है। सी. सोफा आईसीयू टूल है, बेडसाइड रैपिड ट्रिगर के लिए क्यू सोफा इस्तेमाल होता है। डी. कर्ब 65 न्यूमोनिया सिवेरिटी बताता है, सेप्सिस रिकग्निशन का रिप्लेसमेंट नहीं। कर्ब 65 ये न्यूमोनिया के लिए सिवेरिटी स्कोर है। इसमें 5 क्राइटेरिया है जो न्यूमोनिया का असेसमेंट करते हैं। 1. कंफ्यूजन। 2. यूरिया ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। 7. रेस्पिरेटरी रेट 30, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 millimeters per mercury or diastolic less than 60 millimeters per mercury. 5th, age greater than 65 years. Question 2. Suspected sepsis patient, airway secure, SpO2 95% on 2 liters per minute NC, BP 92/56, MAP less than 65. First hour bundle main priority, next step क्या होगा? A. Maintenance fluid 75 milliliters per hour start करना. B. Blood cultures के बाद broad spectrum antibiotics देना. C. Only antipyretics देना, paracetamol. D. DVT prophylaxis तुरंत देना. Answer B. Blood cultures के बाद broad spectrum antibiotics देना. Explanation. Time is tissue. 1 hour bundle. 1. Lactate. 2. Cultures. 3. Broad spectrum antibiotics ASAP. 4. 30 ml per kilogram crystalloid if hypotensive or lactate equals 4. Vasopressors to keep MAP equals 65. Cultures delay किए बिना जल्दी लो. Minutes for antibiotics तुरंत शुरू. गलत क्यों? Maintenance rate नहीं, यहाँ resuscitation bolus चाहिए. Antipyretics से sepsis treat नहीं होता. DVT prophylaxis important है, but first hour resuscitation से पहले नहीं. Question 3. Weight 70 kilograms. Septic shock with hypotension. Initial fluid bolus कितना? A. 500 milliliters. B. 1000 milliliters. C. 2100 milliliters. D. 3000 milliliters. Answer C. 2100 milliliters. Explanation. Formula याद रखो. 30 milliliters per kilogram. 70 kilograms times 30 equals 2100 milliliters. इसको 1 to 3 घंटे में देना होता है, patient response monitor करते हुए. MAP, lungs crackles. UO. गलत क्यों? A. 500 milliliters under resuscitation. B. 1000 milliliters भी कम. D. 3000 milliliters approximate है, but exam में exact 30 milliliters per kilogram choose करो. Question 4. Fluids के बाद भी MAP 58 millimeter mercury. First line vasopressor. A. Dopamine. B. Norepinephrine. C. Phenylephrine. D. Epinephrine. Answer B. Norepinephrine. Explanation. Norepinephrine is first-line vasopressor to achieve MAP greater than 65. Inadequate response I to vasopressin add karsak dehen. Myocardial dysfunction ho to dobutamine add hota hai. Galat क्यों? A. Dopamine arrhythmias का risk बढ़ाता है, selective cases. C. Phenylephrine pure alpha, cardiac output घट सकता है. D. Epinephrine, reserve/second line in refractory cases. Question 5. Early sepsis, warm shock ka classic sign. A.
cool clammy extremities and weak pulse. B. Warm flushed skin with bounding pulse. C. Severe bradycardia. D. Profound hypothermia only. Answer B. Warm flushed skin with bounding pulse. Explanation. Warm distributor shock main vasodilation hoti hai. Skin garam, flushed, bounding pulses. Later, cold phase आता है, cool clammy. इस transition को पहचानना nursing monitoring का core skill है. गलत क्यों? A. Cold phase later होता है. C. Tachycardia ज़्यादा common है. D. Hypothermia हो सकती है, पर only नहीं और warm phase में typical नहीं. Question 6. Lactate 5.2 millimoliter on arrival, fluids के बाद 4.8 millimoliter ही है. Best interpretation? A. Normal. कोई issue नहीं. B. Persistent tissue hypoperfusion, resuscitation continue and reassess. C. DKA confirm हो गया. D. Stop fluids immediately. Answer B. Persistent tissue hypoperfusion, resuscitation continue and reassess explanation. Elevated lactate, anaerobic metabolism का marker high. Trend important high. अगर downtrend नहीं हो रहा. Fluids, map target, oxygen delivery, source control, sub-optimize करो. Vasopressor DO2 का review करो. Repeat lactate. गलत क्यों? A. 4+ elevated hota high. Normal नहीं. C. DKA diagnosis glucose ketones AG pay hota high. Lactate alone nay. D. Fluids abruptly stop mat karo. Clinical picture deco. Question 7. Nursing target parameters during septic shock resuscitation. Sapse appropriate combination. A. MAP greater than or equal to 65 millimeters of mercury. UO greater than or equal to 0.5 milliliters per kilogram per hour. Improving mental status. B. MAP greater than or equal to 55 millimeters of mercury. UO greater than or equal to 0.2 milliliters per kilogram per hour. C. HR less than 60 per minute. UO greater than or equal to 1.5 milliliters per kilogram per hour. D. MAP greater than or equal to 70 millimeters of mercury, mandatory for all. Answer. A. MAP equals 65 millimeters mercury. UO equals 0.5 milliliters per kilogram per hour. Improving mental status, MAP equals 65. Urine output equals 0.5 milliliters per kilogram per hour. Mentation improve, maintain skin perfusion better. Lactate downtrend. ये triad आपको बताता है कि tissues को blood मिल रहा है. गलत क्यों? B. दोनों thresholds low है. C. HR 60 ज़रूरी नहीं. Tachycardia common होता है. D. MAP 70 सबको mandatory नहीं. 65 standard target है. Question 8. Antibiotics देने से पहले cultures कब तक डिले कर सकते हैं? A. 4 से 7 घंटे तक वेट करना ठीक है. B. बिल्कुल डिले ना करो. पहले antibiotics बाद में cultures. C. Cultures promptly within minutes लो, पर antibiotics को 1 hour से ज़्यादा डिले ना हो. D. Urine culture काफ़ी है. Answer. C. Cultures promptly within minutes low, पर antibiotics को 1 hour से ज़्यादा delay ना हो. Explanation. Golden rule. Don't delay antibiotics. पहले cultures low, blood, 2 sets from different sites plus suspected source. पर अगर delay हो रहा है, antibiotics को hold मत करो. First hour के अंदर broad spectrum start करना mortality कम करता है. गलत क्यों? A. 4 से 5 dangerous delay है. B. Ideally पहले cultures फिर antibiotics, पर delay बिल्कुल नहीं. D. Only urine culture inadequate. Source directed sampling चाहिए. Question 9. Suspected abdominal source, perforated appendix with sepsis. Most appropriate next step alongside antibiotics/fluids? A. High dose steroids immediately. B. Emergent surgical consult for source control. C. Only increase vasopressor dose. D. Stop all enteral feeds for 7 days. Answer. B. Emergent surgical consult for source control. Explanation. Sepsis का cure source control है. Pus, abscess, perforation को drain या repair करना. Antibiotics alone काफ़ी नहीं. Surgical IR intervention timely होना चाहिए. गलत क्यों? A. Steroids refractory shock में low dose consider होते. First line नहीं. C. Vasopressors without source control inadequate. D. Feeds का decision बाद में.
Primary issue source control hai. Question 10. Bleeding from IV sites, oozing gums, platelets 38,000 per microliter, PT-INR prolonged in septic patient. Best nursing priority? A. Start methylene blue. B. Recognize probable DIC. Notify provider. Prepare for blood products as ordered. C. Give high-dose heparin immediately to stop clotting. D. Ignore. Ye normal hai. Answer. B. Recognize probable DIC. Notify provider. Prepare for blood products as ordered. Explanation. Sepsis-associated DIC main consumption coagulopathy hoti hai. Oozing, low platelets, prolonged PT-INR, increased D-dimer. Nurse K role, early recognition, vitals bleeding monitoring, lab trends, and blood products, platelets, FFP, cryo, Kalia readiness as per orders. Source control and sepsis treatment continue. Galat Kyon. A. Methylene blue is not DIC therapy. C. Heparin only selected microthrombi cases. Bleeding ho to contraindicated. D. Kabhi ignore mat karo. Ye emergency hai. Next topic comment jarur kren. For more videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates.